Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another world of the angiospermic flowers. So let's move to the ball. So sexual reproduction. In flowering plants. Means the angiosperms. So dear students, हम इसमें डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने डिस्कस कर लिए थे उसमें बेसिक सारी टर्मिनोलॉजी उसके वर्ल्स की डायग्राम के साथ, और डिटेल में देखा था हमने द फर्स्ट वर्ल, द आउटर मोस्ट वर्ल. So the worlds of flower number 1, calyx, the outermost wall. And the first wall, which we have discussed already. The second is corolla, which we are going to discuss today. It is the second whorl. Then we will discuss androecium. The third whorl. Then we will finally discuss gynoecium. The fourth whorl. So dear students, ये तो एक ओवरव्यू था वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर का, ताकि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गिव द नेम्स ऑफ वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर. सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड वर्ल, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट वर्ल. लाइक फोर्थ वन, इट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल, एंड और विच वन इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल. तो इंशाल्लाह इसको हम एक्सरसाइज के अंदर जो क्विज करेंगे उसमें इसको डिटेल के साथ एमसीक्यूज में देखेंगे इंशाल्लाह. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस as we have discussed previously the calyx. Now today we are going to discuss the second whorl, that is corolla. So dear students, corolla, it is the second whorl of flower. Just inner to calyx. Number 1. Number 2, dear students, it is usually present in bright colors. इसके अंदर ब्राइट कलर्स होते हैं, शोख रंग होते हैं. आपने देखा होगा गुलाब का फूल देखा होगा, लिलीज देखी होंगी, या जैस्मिन वगैरह वगैरह डिफरेंट फ्लावर्स. ठीक है, तो उन हर एक फ्लावर के अंदर अट्रैक्टिव कलर के ब्राइट पेटल्स होते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर मौजूद होते हैं ब्राइट कलर्स. इट इज़ यूजुअली
इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्स, मीन्स कि इसकी अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कोरोला की. इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स मीन्स के leaflets are called petals. तो ये जस्ट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है. पेटल्स का जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं कोरोला के, उनको पेटल्स कहा जाता है. तो आपने देखी है पेटल्स, फूल की जो पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी और शोक कलर में, अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर होती हैं. ठीक है. एंड these petals may be or may not be scented. मीन्स कि इनके अंदर खुशबू भी हो सकती है और कुछ ऐसे पेटल्स होते हैं जिनके अंदर खुशबू नहीं होती है. नाउ इट्स फंक्शन. As it is of bright colors, it is present in bright colors. It attracts, ये attract करता है the birds and insects, thus have a role in pollination. और पॉलिनेशन भी डियर स्टूडेंट्स आगे चलकर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आने वाले चंद लेक्चर्स के अंदर. पॉलिनेशन बेसिकली कहलाती है कि पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसका स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके ऊपर लैंड कर जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन. इसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. और डियर स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वर्ल्ड is androecium. So androecium, it is the third whorl of flower. Its individual units are called stamen. ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज stamen. So the individual units of androecium are called as stamen. And remember one thing dear students, it is the male reproductive part of flower. ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं डिटेल के साथ. इट्स पार्ट्स. androecium. So it has got two parts. इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज फिलामेंट एंड नंबर टू इज एंथर. तो पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. So here is
filament and anther. This is called as anther, and this is the filament. That is the structure of a single stamen. So filament को हम define इस तरह से करेंगे dear students, that it is a thread like, आप देख सकते हैं डायग्राम में, a thread like structure of stamen having one end fixed and other end free. ये इसका एंड फिक्स होता है और ये वाला फ्री एंड होता है, और फ्री एंड के साथ अटैच होते हैं एंथर. सो व्हाट इज एंथर? These are the sacs actually which are present at the top or at free end of filament. तो वहाँ पर ये मौजूद होते हैं dear students, और इनके अंदर मौजूद होते हैं द एंथर. इन फिलामेंट जो है एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक्स. इनके अंदर होते हैं पोलन सैक्स इन विच microspores are produced by meiosis or through meiosis. तो डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ कि एंथर, इसके अंदर मौजूद होते हैं सैक्स जिनको पोलन सैक्स कहा जाता है, और पोलन सैक्स के अंदर मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और इन माइक्रोस्पोर्स को एक और नाम दिया जाता है पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स which are called as the microspores. Or dear students, these pollen grains or microspores germinate to form male gametophyte generation. तो उससे बनेगी मेल गैमेटोफाइट जनरेशन. तो स्पोरोफाइट क्या बनवा रही है? द गैमेटोफाइट जनरेशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, this male gametophyte generation means the microspores have a nucleus which undergoes mitosis and produce two nuclei, और वो बनाता है 2 न्यूक्लियाई. और वो 2 न्यूक्लियाई कौन कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स? One is called as generative nucleus,
and the other one is called as the tube nucleus. So my dear students, ये जो सा germinated microspore along with two nuclei is called male gametophyte generation. क्लियर? अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ा सा डिटेल की तरफ। तो इनके अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे स्पोर्स, जिनको हम कहते हैं सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स। दीज आर माइक्रोस्पोर्स। इसमें से एक को निकाल के देखते हैं। सो दिस इज वन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियाई। हमने बात की थी कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो माइटोसिस होगी उसमें, और माइटोसिस के जरिए वो दो न्यूक्लियाई बनाएगा। एक कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है द ट्यूब न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, जनरेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर होगी माइटोसिस। इट अंडरगोज mitosis and produces two sperms। ये बनवाएगा दो sperms। और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है, it upon germination it produces pollen tube। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? आफ्टर दैट so here is the pollen grain having two sperms and a tube nucleus। जब ये लैंड करेगा मीन्स का पॉलिनेशन होगी, तो उसके बाद ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये डेवलप करवाएगा पोलन ट्यूब को। So these are sperms and this is tube nucleus and this is actually the male gametophyte। So dear students, याद रखिएगा इस सीक्वेंस को कि मेल गैमेटोफाइट हमेशा बनेगी फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं दे फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, और मेल गैमेटोफाइट जनरेशन से बनेंगे मेल गैमीट्स दैट आर द स्पर्म्स। और वो किस तरह से बनेंगे कि जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द ट्यूब न्यूक्लियस। और स्पर्म्स किससे बनेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिविजन्स के साथ। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट एंड द इनर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज गायनोशियम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।